Good evening to all of you. Today we are going to talk about the very well known bank nationalization case. The parties are R.C. Cooper versus Union of India. The citations are AIR 1970, SC 564, 1970, SCR 3530. It was a writ petition under Article 32 of the Constitution of India. It was decided on February 10, 1970. Bench constituted 11 judges. The judgment was given with a majority of 10:1. The dissenting opinion was of Justice A. N. Ray. These were certain factual informations regarding this case. Now, we need to ponder upon as to why is this case important in the context of banking law. And for that reason, we need to understand that there is a topic in our syllabus, social control and bank nationalization. So we need to find out the connection between these two terms. As in, ये सोशल कंट्रोल कैसे बैंक नेशनलाइजेशन के थ्रू हुआ या कैसे बैंक नेशनलाइजेशन एक टूल बना सोशल कंट्रोल का इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर. सो फॉर दैट वी नीड टू गो टू द बैकग्राउंड जहाँ पर सोशलिज्म की बात हो रही है हमारी सोसाइटी में. एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, इट वॉज बीइंग टर्म्ड एज फेबियन सोशलिज्म, जिसका मतलब है कि इट वॉज रिक्वायर्ड, द टर्म सोशलिज्म और इट मे बी फेबियन सोशलिज्म, it was all required for the better development of the country. These were the ideologies of the people who led the government at that time, right? So as per their opinion, they thought that it was necessary to exercise control over certain industries which were very important. फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी. तो जो स्टेट था उस टाइम पे, या जो हम कह सकते हैं द पीपल हु वर लीडिंग द गवर्नमेंट, दे वांटेड द कंप्लीट मोनोपोली ऑफ द स्टेट ओवर दीज ओवर सच काइंड ऑफ बिजनेसेस. दिस केस स्टार्टेड विद द प्रपोजल टू नेशनलाइज द बैंकिंग सेक्टर. यानी हमने कहा यहाँ पर सरकार जो है वो ये चाह रही थी कि वो क्या करे, वो बहुत महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स के ऊपर अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ले. एंड अकॉर्डिंगली बैंकिंग सेक्टर वाज नॉट एन एक्सेप्शन टू इट. तो वो चाहते थे कि हम बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी अपनी मोनोपोली या मैक्सिमम कंट्रोल एक्सरसाइज करें. Accordingly, Justice M. Hidayatullah, the then acting President of India, issued an ordinance. And just 2 days before the monsoon session of the Parliament, this ordinance was named as Banking Companies Acquisition and Transfer of Property Ordinance 1969. Now, soon after the promulgation of this ordinance, Mr. Cooper, who was the director of Central Bank of India and also shareholder in many other leading banks, he filed a writ petition on 21st July 1961 under Article 32 of the Constitution, and which stated that the fundamental rights being violated by this ordinance, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी. And this petition was heard on 22nd July 1969. कोर्ट ने ग्रांट कर दिया इंजंक्शन to stop the directors from being vacated from their offices immediately. इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या क्या इश्यूज रेज किए गए. पहला इशू था क्या ये जो whether a shareholder could file a writ petition for violation of fundamental rights when the said company is acquired by the government. The other issue was whether the ordinance in question had been properly made or not. The third question was whether the act was within the jurisdiction of the parliament to get formulated or not. Next was impugned act whether the impugned act was violative of Article 19(1)(g) and Article 31(2) of the Constitution or not. And also lastly, the major bone of contention was that of methods of compensation, were they valid or not. Since we talked about what were the issues raised in this case, we also need to talk about what this ordinance did, or we can say in other words, what are the features of the ordinance. तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहला फीचर ये था कि इसकी वजह से 14 बैंक लिस्ट कर दिए गए जिनको हमें नेशनलाइज करना था. इसके अलावा ये जो बैंक्स जिनको सिलेक्ट किया गया था, दे वर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट. यानी कि जिनके पास 50 करोड़ से ज़्यादा कैपिटल अवेलेबल था, वो बैंक्स को एनलिस्ट किया गया टू बी नेशनलाइज्ड. अपार्ट फ्रॉम इट, all the directors were asked to vacate their offices, plus
Rest of the staff was allowed to continue in their jobs under the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जो इसका सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन था इस पूरे ऑर्डिनेंस और या आप कह सकते हैं इस पूरे केस के अंदर, वो था इसका सेकेंड स्केड्यूल, जिसके अंदर बात की गई कि जब हम डायरेक्टर्स को वेकेट करा रहे हैं या बैंक्स को अचानक से नेशनलाइज करा रहे हैं, तो व्हाट कुड बी द वे ऑफ द कॉम्पनसेशन टू बी पेड टू द बैंक्स, राइट. तो दो तरीके बताए गए. अगर वो अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन पे अग्री कर जाते हैं तो वो अमाउंट, अगर अग्री नहीं करते हैं तो ये मैटर जो है ट्रिब्यूनल में जाएगा और 3 महीने के अंदर उसे अवार्ड देना होगा उस ट्रिब्यूनल को. एंड अवार्ड में वो सिर्फ ग्रांट कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो कि रेडीमेबल होंगी ओनली आफ्टर द 10 years. एंड लास्ट फीचर वॉज कि इस ऑर्डिनेंस के 2 दिन के आने के अंदर ही अंदर ये ऑर्डिनेंस एक एक्ट के रूप में तब्दील कर दिया गया या बदल दिया गया. So these were certain features, or you may also say at the bone of contention which were, which you can see under this ordinance. And the judgment of which follows by the majority of 10:1, क्योंकि मैंने आपको बताया इस केस के अंदर 11 जजेस की बेंच थी, जिसमें से 10 जजेस were in the majority and only 1 judge was having a dissenting opinion. तो यहाँ पर इन्होंने सबसे बोला कि इफेक्ट टेस्ट के ऊपर फोकस किया. इन्होंने कहा अगर कोई भी एक्ट या पीस ऑफ लेजिस्लेशन इवन एट द रिमोटेस्ट स्टेज वायलेट्स फंडामेंटल राइट, इट शुड बी लायबल टू बी स्ट्रक डाउन. दूसरे क्वेश्चन के ऊपर इन्होंने बोला कि चूंकि ऑर्डिनेंस ऑलरेडी एक एक्ट में कन्वर्ट हो चुका है तो अननेसेसरी है कोर्ट के लिए डिस्कस करना कि ऑर्डिनेंस सही भी था या नहीं सही था. पावर ऑफ तीसरा जो पार्ट था उसके ऊपर डिस्कशन ये किया गया जो पावर ऑफ पार्लियामेंट है टू एक्वायर एनी बैंकिंग कंपनी. इट इज़ एन इंडिपेंडेंट पावर एंड इट नीड्स नो सेपरेट लेजिस्लेशन. नेक्स्ट इज दिस एक्ट वॉज इन क्लियर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 31 clause 2 but it was not violative of article 19(1)(g). In addition to these things, there was one more observation made by the judges which stated that the said act which was in question, it was in clear violation of article 14 as well. So these were certain points जिसके ऊपर पूरा judgment lay down किया गया, and you need to clearly understand that there are n number of political considerations as well behind this this whole incident, this whole bank nationalization case. So we need to scrutinize this case not only with the perspective of the banking law, but we can also understand it with the specs of the dynamics of the political science or politics which happen in India, right? So this was all about the bank nationalization case.